right. So, hi everyone. If you all can hear me, just give me a thumbs up. We are live on YouTube as well. I'm just going to let my favorite track slightly go off track for some time. All right. So, let me just turn on my camera. And here you go. So, thank you so much, everyone. If you can just see me live on YouTube, those who are watching me on YouTube, welcome to this special session. And all the supermen, let me switch to the gallery view so that all of you can switch at the camera and say hi to all the people on YouTube. So thank you so much for joining in. Just we are switching back to the speaker view, and let me just start this amazing evening. Uh, so all of you got the homework for today. You all of you saw my video. Type yes in the chat box. The video that I sent, and that was all about what do you understand by rich life. Yeah. So according to you, what is your rich life? Just type in the chat box. What according to you is the rich life? आपके हिसाब से rich life क्या है? I'll wait for the answers, and I'll also go and watch on YouTube. People who are commenting or there. Awesome. So people who are watching me on YouTube, my name is Ujjwal. I'm just going to introduce myself as well. So financially strong, which somebody is saying financially strong, okay, healthy and happy, absolutely. To stay healthy, satisfied, having enough money to live and fulfill our dreams, awesome. When you're healthy, of course. So Jyoti is taking care of your health, right? With Jyoti, you all are practicing health and becoming healthy, and I am here to help you practice wealth so that you all can become wealthy and rich. Okay, so having enough money to manage a good life, a family. Uh, but how many of you are actually living a rich life? Type yes if you are actually living a rich life, or you can type no, or somewhere if you're not close to your rich life. Let me see. Yeah, big no. Sometimes no, yes. See, I mean, and that is why I'm here today. The reason why I'm here today, let me just switch and see all of you. Yes. So the reason I'm here today, in the next 45 minutes to 1 hour time, I'm going to blow your mind, just bring some new facts of life, and जो कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है अगले 45 मिनट में, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और खुद अपने बहुत सारी गलतियों से सीखा है इतने सालों में. ओके, सो आई वुड वांट टू टेक यू बैक टू माय चाइल्डहुड डेज. ओके, एंड एक बच्चा था छोटा सा, ऑफ कोर्स द स्टोरी इज अबाउट मी. सो आई यूज्ड टू वॉच एवरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ one person coming to our home, and I'm not taking his exact name because this is live on YouTube as well. Uh, this person used to come. I'm taking another name. His name was Atma, and he used to come and ask that कि पैसे इस महीने की सैलरी आ गई है मेरी मम्मी की. तो he used to always ask कि हाँ जी इस महीने का उस समय बेसिकली इट वाज यूज्ड टू कॉल एज ब्याज पे पैसा. आप लोगों ने सुना होगा. हैव यू हर्ड अबाउट इट? राइट. सो वी वर इन डेप्ट. बहुत ज्यादा कर्ज में थे हम लोग, एंड वी वर नॉट रियली स्टेबल. एंड ही यूज्ड टू कम एवरी मंथ, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क माय मदर कि ये हर महीने क्यों आते हैं शुरू में. तो मम्मा यूज्ड टू से दैट कि वी नीडेड मनी, एंड देन वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने इनसे पैसे लिए, और हर महीने सिर्फ हम वी आर जस्ट पेइंग इंटरेस्ट. And it took almost 5-6 years for my parents to come out, especially from this person debt. But it actually had a very big impact on my life and my understanding of money. So मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ chat box में that what exactly is the word, some of the famous words, quotes related to money जो आपने बचपन में सुना है. Type in the chat box. कुछ हिंदी की कहावतें या कुछ ऐसे ऐसी चीजें जो आपने बचपन में सुनी है और आपने उस पर ट्रस्ट भी किया है. लेट मी रीड आउट, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो
use your typing skills and share what have you heard about money. Yeah, in the past, in your childhood. Okay. This is the famous one. जितनी चादर उतनी पैर. Yes. जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो. Nice. बट क्या कभी आपको किसी ने ये सिखाया कि चादर होनी कितनी बड़ी चाहिए आपके लिए? जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन. टाइप यस और नो. कभी किसी ने कहीं किसी स्कूल में सिखाया कि अच्छा ओके चादर कितनी बड़ी होनी चाहिए? नो. अब nobody tells you because it is not there, anywhere. So then I started my career and career start करने के बाद जब पैसे आने लगे तो थोड़े से उसी हिसाब से खर्च भी शुरू हो गया. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जब आप नया नया जॉब शुरू करते हो या नया नया काम शुरू करते हो तो ऐसा होता है कि यू आर अर्निंग बट 20 या 22 तारीख 25 तारीख मैक्स के आसपास पैसे कुछ नहीं बचते. डू यू अग्री? ऐसा होता है? या एंड दोज हु आर होम इंजीनियर्स, डू यू फील द सेम कि आपके हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही होता है? या यू बेसिकली लिविंग पे चेक टू पे चेक. या और पता भी नहीं चलता. हाँ, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री. यस, वेरी फेमस कहावत. या एब्सोल्युटली. सो सो दिस इज व्हाट जब मैंने अपना जॉब शुरू करी अपनी एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, this is when credit card came into my life. How many of you have got credit cards? Type yes in the chat box. It came into my life and I felt like, wow, I've got so much of money. Okay, some of you have got yes, but then I started falling in the trap of credit cards. One swipe here and there, one credit card after another, then after another, then few more, and one day I felt that I've got 10 credit cards. Type crazy that this is how you fall in the trap. And then very soon I realized that I have got tons of debt. Itna jada, I was into loans and but I was of course living a amazing life. But was it a rich life? All of you, was it a rich life? No, it was not. I always felt that I'm living a rich life, but no, in reality I was not. एंड आई ऑलवेज यूज टू फील दैट काश ऐसा कुछ होता जिससे पता चल पाता कि क्या कोई ऐसा टूल होता या कुछ ऐसा सिस्टम होता जिससे ये पता चल जाता कि कितना कमाना है, कितना कमाना सही है, कितने सेव करना चाहिए आगे के खर्चे. सो आई गॉट मैरिड एंड ट्रस्ट मी, आई वाज नॉट हैविंग इनफ फंड्स टू टेक ज्योति टू वेकेशन. I was not even able to invest money in my marriage. I was literally broke. That's a fact. And that is what I started learning this. I started learning that why my behavior is such. So how many of you, feel that आपकी भी almost इसी तरह की ऊपर नीचे journey रही है? Type yes, yes, type similar. If you have something sort of similar kind of a journey, maybe. So that is what I started learning. So फिर मैंने सीखना शुरू किया कि what exactly money is जो किसी ने सिखाया ही नहीं है, right? And what I'm going to share today is for the first time in my life, I am sharing this with you all. And I've created an amazing course with a lot of solid tools that are going to, that आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. ऐसे tools मैंने build किए हैं पिछले 1 महीने से. I'm working on it, I'm reading, and of course जो ये work है, it is for years, but all the mistakes that I've done and all the things which now I can say proudly say that I'm financially stable. Almost all the loans have been paid off. We're still in the process of paying off, but yes, what I'm saying is that I've discovered something on my own. I'm not studied, I'm not a financial planner, or मुझे बहुत अच्छी knowledge है. No, what I'm going to share today is from my experience and all the learnings that I've learned and created my own tool which I use, which is helping me a lot. So how many of you are ready to learn? Type ready to learn in the chat box. Let me just start sharing the learning of the day. I just wanted to set this context so that you all understand why this session, what are we going to do today. All right, so the funda is simple. Today's session we are going to learn the formula to create your rich life. Before I start, people who are watching me on YouTube, let me share before ये session है किसके लिए. So this session is
for home engineers. I don't call homemakers. I learned this from somewhere. So all the homemakers, you are home engineers. You are the one who are literally engineering the entire home. So this session is for all the homemakers, home engineers, all the businesswomen. How many of you are businesswomen in the house? Type BW in the chat box. I have a huge respect for people, especially women who are running businesses. Yeah. All the working women, type WW in the chat box. Let me see how many of you are working women in the house here. Yes, let me open up the chat box. Awesome. Preeti, Ankita, Komal, awesome. All right. And this session is also for husband. So if your husband is around, ask him to be here because I'm sure they would correlate. They would relate with what I'm going to share today. And of course, who are students, they can also learn because जब मैं student था तो ये किसी ने नहीं सिखाया. Nobody taught me all of this, right? So now we're going to start the session. Before I start, people who are watching me on YouTube, let me share who I am. So my name is Ujjwal Abhishek, and I am the co-founder and CEO of Fitness Funda. Fitness Funda, Funda with Jyoti is India's leading women fitness brand. I also am a money mindset and business growth coach. So I help a lot of people, especially businesses, help them grow, which I've helped so many businesses in the past. So that's what I do. And apart from that, of course, in this journey, बहुत कुछ किया है, but yes, I will not share much because in short, I'll share that yes, this is my small team that we have created. I'm also author of Amazon best-selling book called Zero Stress Funda. Was fortunate enough to be in touch with a lot of great people like Siddharth Rajshekhar, who's my also mentor, and a lot of great people. I've learned so many things in the past, but yes, the best thing is that what I love is being a husband and father to amazing daughter Arna. So that's something which is the best role that I play in my life. So all of you know Jyoti, just type your one word for Jyoti in the chat box, and all of you some words for Arna as well. All right. So thank you so much, everyone. And what I'm going to do today, let me share three things that I'm going to share. Number one, we'll learn the recipe for rich life, what exactly it is. And that recipe will not be कि मैं कुछ ऐसा over कुछ कुछ ऐसा rocket science share करने वाला हूँ. Something which is very simple. But before that, all of you who all are married, I know you all love your husbands, but don't love the numbers. How many of you don't love numbers, maths? Hmm? Type something, especially I'm talking to all the superwomen. Money is something which mostly money or numbers are something which most of people find it very difficult. But yes, I'm going to make this very simple for you. So right now, type in the chat box, I love numbers, because I want you all to first start falling in love with numbers. तभी आप समझ पाओगे रिच लाइफ बनती कैसे है, राइट? और मैं नंबर्स को बहुत सिंपल करने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके? एंड पीपल हु आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, type I love number in the comment box. All right, great. Thank you so much. So रेसिपी जानेंगे आप लोग आज. रेसिपी से खाना तो बनाते हो घर में, बट आज रिच लाइफ की रेसिपी बताने वाला हूँ. एंड 3 सीक्रेट जो मैंने खुद सीखा है फॉर मनी मास्टरी, ओके? चाहे आप जितना भी अर्न करते हो या फैमिली की आपकी इनकम जितनी भी है, यू स्टिल कैन मास्टर द मनी एंड स्टिल सेव एंड लिव अ रिच लाइफ. That's very much possible. You just need to understand the numbers. Okay. And that is why I want each one of you to, of course, love your husbands and your, fathers and brothers. But yes, start loving the numbers as well. And of course, your kids, of course. How can I forget that? And last but not the least, साइड इनकम स्ट्रीम्स या साइड हसल स्ट्रीम्स, ये मैं आज बताने वाला हूँ. और आज मैं आपको 20 ऐसी साइड हसल स्ट्रीम्स बताऊंगा जो वर्किंग वुमेन, बिजनेस वुमेन, इवन होम इंजीनियर्स, यू ऑल कैन स्टार्ट. बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है ना, ऑनलाइन वर्ल्ड है, बहुत सैचुरेशन आ गया है, 2 साल 3 साल से कोविड चला गया है, ऑल ऑफ दैट. नो, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, ओके? तो अभी ये सिर्फ शुरुआत है. और इस टाइम पे जिसने अपना ऑनलाइन स्पेस में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया, द स्काई इज द लिमिट. या
All right, thank you so much, everyone. So, game on. Type करिए chat box में. Let me see how many of you are ready to learn these 3 secrets today. So, I'm just going to start sharing my screen, and there you go. All right, so I'm just going to share a very simple mind map. Okay, and I'll share the secrets as well. So पहले मैं तो आप लोगों ने रिच लाइफ तो बता दी अपनी अपनी, राइट? जो भी हमने मनी के बारे में सुना है कि मनी के से रिलेटेड बैरियर्स बहुत सारे हमें बताए गए हैं. सो सम ऑफ द थिंग्स व्हिच हैज बीन स्टॉपिंग यू गेट दैट रिच लाइफ और गेट क्लोजर टू द रिच लाइफ, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज दैट थिंग अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको लगता है कि ये चीज बैरियर है मेरी लाइफ में to get the money that we want or to live a rich life. I want to read your comments, think about it, give a thought, and then I'm going to ask 2 simple questions to all of you. Well, just type in the chat box. Let me see. Okay. खर्च बहुत ज्यादा करती हूँ मैं. क्योंकि पता ही नहीं होता ना कि कब खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो जा रहा है, राइट? हाउ मेनी इफ यू वांट टू हैव अ टूल दैट कैन टेल यू दैट आप कितना खर्च कर रहे हो, या कितना आपका बजट है, या कितना आपको खर्च करना चाहिए? Do you want to know that? Type yes in the chat box. Today I'm going to share that. Many limitations, okay? Financial responsibilities like education, food, loans. Yeah. See, हम सब लोग इस सिचुएशन में होते हैं लाइफ के, and that is what I'm going to ask you 2 important questions. First question is, do you want to live a life where, जब जैसे मेरी सिचुएशन थी, that once my sister met with an accident, I was not having any funds even during my marriage also. Okay, so उस time पे I was in that zone where I had to arrange for funds. तो वो कहाँ से होता था अरेंज? या तो क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिया, या फिर कहीं कोई पर्सनल लोन ले लिया, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू थिंक दैट मेरे पास बहुत ऐसा पैसा है, बट दैट इज something called as a reactive approach. And then there's an approach where you know that tomorrow there could be an emergency, or tomorrow, let's say your child is going to get education, higher education, or in future your child is going to get married, or you are going to get retired, and for that you are saving it proactively. What is a better way of living the life? Is it the reactive way or the proactive way? Type R for reactive or P for productive. I know it's a very simple question, but I want all of you to think about it. और मुझे अब ये प्रोएक्टिव तो अच्छा है ना, बिल्कुल सही है, आपने मुझे पता था आप लोग ये आंसर करने वाले हो, बट आप मुझे ये बताओ दैट व्हाट इज द मेथड यू फॉलो? आप रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव हो मनी से रिलेटेड? ऑनेस्ट आंसर देना चैट बॉक्स में कि आप रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव हो. So I know, I mean, that's something which is very common. Trying to be proactive, but yes, that's something which is very common. You know why? Because nobody taught this, right? So मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. I'm just going to share what are the things that can help you become proactive, right? So if you really want to be proactive and learn this science, just type yes in the chat box. I'm going to share that today also. And also, जब मैं बताया कि when my sister met with an accident, I was not ready at all. In fact, she was having the health insurance of just 5 lakhs. How many of you have got health insurance? Type yes in the chat box. And we had to spend about more than 20 lakhs just for the surgeries, and then there were more expenses later on. Okay, and we were not ready at all. And literally, that was again one of the most difficult time of my life. And this was just 4 or 5 years back I'm talking about. Okay, so yeah, so let me just share that how we can be ready for any emergency, and how we can live a proactive life, not a reactive life. Okay, so let me just share my screen again, and I'm going to start sharing the secrets one by one. Okay, so are you ready to learn the secret one? Type secret one or type ready in the chat box. Let me see how many of you are ready to learn the secret one.
And this is a secret which I know no, most of you, 95% of you have not done in the past. Okay. So the first secret is, do you know your net worth? Okay. Now, what exactly is net worth? Have you heard about this concept कि आपका net worth कितना है या कभी आपने अपना net worth calculate किया है? Type yes or no in the chat box. Let me see how many of you have done this. Okay. Some of you have done it. Okay. Most of you have not done it. Yeah. All right. So people who are from finance, maybe they would know that what exactly it is. But I want to share this simple formula. और ये पहला सीक्रेट है जो बहुत जरूरी है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका नेटवर्थ पॉजिटिव में है या नेगेटिव में. ओके. ये आईना सबसे जरूरी है देखना. बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज हैविंग क्लैरिटी. राइट डाउन इन द, आप लिख सकते हो अपनी डायरी में, द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज हैविंग क्लैरिटी. कि मतलब सच्चाई क्या है. एंड द वर्स्ट थिंग इन लाइफ इज हैविंग कंफ्यूजन. ओके. तो ये जो नेटवर्थ है, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है कि आपके पास कितना एसेट है और कितनी लाइबिलिटी है. Towards end of the session, I will show you the course that I've created. In that, what are the things that you have to list down in asset? आपको सिर्फ वो numbers डालने हैं और जो भी liabilities हैं वो कैसे calculate करके डालनी है. That is their part of the course, and you will be able to know. आपको calculate करने की जरूरत नहीं है, वो sheet अपने आप बता देगी कि what is your net worth. Okay, so coming back to this thing, दो ही secret है नेटवर्थ से रिलेटेड. आपका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज. जितने भी एसेट्स आपके पास है, कैन यू ऑल गिव सम एग्जांपल्स इन द चैट बॉक्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज वेल. या सो any property that you have, any, if you have got gold at home or cash at home, right? It is all your assets. And what are your liabilities? यानी कि जैसे कोई लोन है, यस. क्रिप्टो एसेट्स, यस, ऑफ कोर्स. loans on credit card, EMIs, all of that are your liabilities. Yeah. Now coming to this thing, अगर आपका net worth positive है, that means you are close to your rich life. But the most important thing is that, how many of you remember COVID के टाइम पे बड़े बड़े businesses जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बट दे हैड टू शट डाउन देयर बिजनेसेस और उनके पास एनफ पैसे नहीं थे. रेज योर हैंड इफ यू ऑल रिमेंबर द टाइम ऑफ कोविड कि लोगों के पास पैसे नहीं थे अपने एम्प्लॉयज को पे करने के लिए. डू यू ऑल रिमेंबर कितने बिजनेसेस बंद हुए? या ऑलराइट. सो नाउ इफ यू रिमेंबर दिस, व्हाट वाज द रीजन? प्रॉपर्टी बहुत थी, लेकिन क्या चीज थी जिसकी वजह से उनको बिजनेसेस शट करना पड़ा? व्हाट वाज द रीजन? The reason was very simple. They were not having enough cash flow. Yeah, लिक्विड ही नहीं था, पैसा ही नहीं था. तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको ये लिख लो आप लोग कि आपके पास लिक्विडिटी जरूर होनी चाहिए. नेटवर्थ तो है, प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन जब जरूरत पड़ गई और कैश नहीं है आपके पास, तो फिर कोई रिच लाइफ नहीं है. उस दिन रोड पे आ जाओगे आप. तो अंडरस्टैंड लिक्विडिटी. और आज मैं ये भी बताने वाला हूं कि लिक्विडिटी आप कैसे बिल्ड करोगे अपनी. But you should have a liquidity of minimum 3 to 6 months of your expenses. यानी महीने के आपके जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो आप रेंट दे रहे हो या ईएमआई दे रहे हो या जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो जो टोटल एक्सपेंस है वो आपको कम से कम 3 से 6 महीने का आपके पास होना चाहिए. If this is a bulb on for you or something, this is you are not aware, type DMK in the chat box. This was the first thing that I wanted to share. I know सबको पता होता है, but this is very simple thing that I wanted to share. That's the first thing you all should do as an exercise. Calculate your net worth. It should be positive, and you should have liquidity of minimum 3 महीना or 6 months, so that you are always ready. Okay. So far, how many of you are enjoying this learning? Type yes in the chat box or type E in the chat box. Let me see how many of you are actually learning something new, learning something interesting. Thank you so much, everyone. It truly means a lot. All right, so that's the first secret. Are you ready to learn the second secret? Are you ready?
Type ready in the chat box. Let me see how many are actually ready to know the second secret, because that's something ये मैं कहीं से ना मैंने सीखा है, मैंने कहीं से भी ना ये लिया है, ये खुद मैंने खुद जो सीखा है अपनी एक्सपीरियंस से. दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल, एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर. So secret 2 is very simple. This is what I love. How many of you have heard about P&L? P&L का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस. तो अगर आप अपनी जो रोज जो मंथली अपनी जो साइकिल चलता है आप लोगों का, सैलरी का या बिजनेस का, यू ऑल शुड हैव अ मंथली P&L विच इज मंथली प्रॉफिट एंड लॉस. और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरी सिंपल. जितना आपका इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, और अगर आपके पास सेविंग 40% to 50% बच रहा है तो दैट मीन्स यू आर लिविंग अ रिच लाइफ. अगर ये 40% नहीं बच रहा है तो फिर या तो दो ही तरीके हैं. आप बताओ चैट बॉक्स में कि क्या तरीका है सेविंग 40% लाने का. अगर अभी फिलहाल आपके पास सेविंग, अच्छा बाय द वे टेल मी इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट हैविंग सेविंग ऑफ 40 to 50%, जितना भी आप अर्न करते हो. टाइप यस और नो. अगर नो किसके लिए नहीं, अगर आप सेव करते हो, यस उसके लिए जिसके लिए आप सेव करते हो. Okay, some of you are yes, perfect, awesome. But most of you are no. Yeah. So if you're saving 40%, awesome. But if you're not saving 40%, this is something which is, and I'm going to tell you that, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आते होंगे कभी आपके पास की, इसके लिए ये वाला पॉलिसी ले लो. कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये वाली पॉलिसी ले लो जी रिटायरमेंट के लिए, ये वाली पॉलिसी ले लो बेटी की शादी के लिए, ये ले लो. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट टुडे. आई विल टेल यू कि कैसे आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, और हर एक चीज आप खुद फाइनेंशियली अपने सारी लर्निंग्स को लर्न, मतलब आपको जरूरत ही नहीं है किसी के सामने सीखने की या किसी किसी के सामने जाने की. यू कैन ऑल बी सेल्फ सफिशिएंट. ओके, या एलआईसी वाले भी आते हैं. यस, एब्सोल्युटली. So now let me just come back to this thing, and with no offense to any of the financial institution, what I'm trying to say is that we all have to be smart about our money, because it is our money. Type our money or type my money if you truly want to own your money and not let anybody else decide about it. That's again a process, or simple mindset of living a rich life. It is your money. You should know where to invest. You should know where to spend. Yeah. So now that's the second secret. आपका मंथली P&L जो है वो ग्रीन में होना चाहिए, और मिनिमम 40-50% आपके पास सेविंग होनी चाहिए. 100 रुपए कमा रहे हो, 40 रुपए बचने चाहिए. ओके, क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स. Awesome. Thank you so much, everyone. All right. So now let's move to secret 3. Now secret 3 क्या है? Very simple. फ्यूचर आना ही है. कितने लोगों को लगता है कि आज में जी लो, फ्यूचर की देखी जाएगी. बट हम भूल जाते हैं कि फ्यूचर आना है. इट इज बाउंड टू हैपन. इट इज सपोज टू हैपन, एंड इट विल कम. एंड माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली फ्यूचर रेडी? टाइप yes, ready for my future. Okay, all of you are ready. But how many of you are actually literally ready with your finances, that I am really ready? See, ready का मतलब ये मत समझो कि आपके पास एनफ फंड्स हैं या पैसे हैं. मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, क्या आपको क्लैरिटी है कि मुझे आज से 15 साल बाद क्या क्या मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना फंड होना चाहिए. उसके लिए एग्जाम्पल, मैं 20 साल बाद रिटायर करूंगी या 15 साल बाद रिटायर करूंगी, तो उस समय मेरे पास कितना फंड होना चाहिए जो मेरे पास महीना हर मंथ आए, और उसके लिए मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. क्या आपने ये इतनी क्लैरिटी आपके पास है? अगर है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. ओके, ऑसम. सो that is what I mean to say about being future ready is 2 things. First, आपको आपका एक रिच लाइफ का गोल आपके पास होना चाहिए कि 1 साल के बाद मेरे पास क्या क्या मुझे खर्च करना है और कहाँ पे खर्च करना है. राइट, आई विल टेल यू when the course that I've created, in that everything is there. कि अगर आपको गोल सेट करना है रिच लाइफ जीने के लिए, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का और 15 साल का, इवन 20 साल का भी, for that you should know that okay, कौन से ऐसे खर्चे आने वाले हैं. क्या एजुकेशन पे आने वाला है खर्चा, या कहीं आप ट्रैवल करने वाले हो, या कोई शादी है,
या लेट्स से आपको कोई लोन्स खत्म करने हैं, या खुद की रिटायरमेंट है, राइट? So that is what is the first thing in the third secret, that you should do a goal setting. So how many of you truly want to do this? पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, how many of you have never done this? Type never done in the chat box कि कभी किया ही नहीं ये चीज, बैठ के, वो भी अकेले नहीं, with your family, let's at least with spouse or somebody who's the earning member in the family. I know we don't do it because it is not being taught. That's the reality. ये सिखाया नहीं गया है कि बैठ के हम बात करें, प्लानिंग करें. Yeah, and that is what I'm going to tell your husbands if they are sitting right next to you. That is the most important thing, sitting together and doing your rich life planning. Yeah, so type cheers to rich life in the chat box if you're going to discuss this, and at least create 3 years, 5 years, 10 years, 15 years rich life goal together with your spouse, or together with somebody who's there responsible in your family. Even if you're alone also, it's completely fine. You should sit down, and we are here to even help you with all the tools also. Okay, और ये सिर्फ अभी ये जो आपको माइंड मैप दिख रहा है, आपको अभी कुछ टाइम बाद में आपको टूल्स भी दिखाऊंगा जो बिल्ड किए हैं, और उससे आपको, मैंने बोला था ना आपको, मैं आई एम गोइंग टू ब्लो योर माइंड, तो गेट रेडी फॉर दैट. ओके, नाउ apart from that, being future ready is that having a safety net. Now when I say safety net, that means, how many of you have got health insurance? Type yes in the chat box. And minimum of 5 lakhs to 10 lakhs, और ऐसा हो कि वो हर साल ग्रो हो रहा हो. अगर 5 लाख का है और इस साल आपने यूज नहीं किया, तो अगले साल 7.5 लाख का या 10 लाख का हो जाए. Awesome, awesome. This is something very interesting, and I'm really happy to see mostly yes. If you have a company tomorrow, if you leave the job, you will not be having any health insurance. So you should always have a parallel health insurance. Maybe lesser, अगर कंपनी वाला अगर ज्यादा है, let's say 10 लाख का है, तो आप एटलीस्ट 3 लाख का या 5 लाख का करा के रख लो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, is it just for you or for your entire family? Is your entire family covered for this, especially for this kind of emergency? Awesome. And if it is not covered, please, this is the most important thing, at least health insurance सबसे जरूरी है. Now next question, how many of you have got your term insurance done? That's the second safety net. Term insurance means if the breadwinner of the family passes away due to any situation, there is a lump sum, there is a good amount of, let's say, 1 crore or 2 crore is giving to the person. और आपने ये कराया हुआ है, टाइप डन. और अगर नहीं कराया हुआ, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म इंश्योरेंस, और मिनिमम 1 करोड़ का, टाइप डन और यस इन द चैट बॉक्स. नहीं कराया, टाइप नो इन द चैट बॉक्स. Right, this is the second element in the safety net. And those who are, let's say, homemakers, home engineers, आप भी करा सकते हो अपने husband के साथ. And if you are alone or single mother, you should definitely get it done. Yeah, and the sooner you get it, the lesser, you have to pay for that insurance. Okay, and जितना आप डिले करोगे उसके लिए प्रीमियम उतना ही ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा. Okay, so that's the second thing in the safety net. Okay, तो पहला हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा क्या है, टर्म इंश्योरेंस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज टू, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो. जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी मिनिमम 3 to 6 months, दैट इज द थर्ड थिंग इन द सेफ्टी नेट. ये 3 चीजें सबसे जरूरी हैं. एक बोलते हैं ना, एक ऐसे रिच लाइफ में बहुत सारे लोगों ने लिखा था, हैप्पी जी पाए, स्ट्रेस फ्री जी पाए. अब ऐसे कितने लोग ऐसी नींद चाहते हैं कि कॉन्शियसली भी आप जैसी आंखें बंद करें नींद आ जाए, और सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई टेंशन ना हो, आराम से, जो बोलते हैं ना सुकून की नींद. कितने लोग ऐसी नींद चाहते हैं, क्या हमेशा ऐसी रहे? एंड दैट, you can type me or yes in the chat box, because that is what rich life for me means, at least, right? That that even if you're there or you're not there, your family, your finances are always safe. Yeah, and that is why I'm here today, to just help you at least understand that this is important. At least आपने इतना भी समझ लिया ना आज की ये जरूरी है, मेरा काम हो गया, my work is done. Because then you'll start taking some action, some steps. Okay, so how many of you so far, I am going to shift to the gallery view, how many of you so far at least have got one action from this call? It has just been 36 minutes, but how many of you got at least one action from here
so far? एक action. Just type one in the chat box. You've got at least की एक चीज तो मुझे करनी है अभी. Thank you so much, everyone. Awesome. So now I'm going to share the exact thing that I have created. By the way, this course that I've created, this is something which I'm launching for the first time. Okay. This lesson that we are covering today is complimentary for Superwoman. But the course, people who are watching me on YouTube, there is a it's not a free course, it's a paid course. But before that, let me show exactly जो tool है वो क्या है. How many of you want to see that? Type bring it on in the chat box, because that is something which is the real work that I have done. Awesome. Thank you so much, everyone. So now बहुत मेहनत करी यार इस पे. So let me just share this in a crux, not taking much time. So I'll not take this in much detail. Yeah. But all I'm trying to say is that the tool that I've created, there are almost 7 different steps. Okay. But वो इतने step by step है. Okay. कि आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी रिच लाइफ कैसी होनी चाहिए, 1 साल बाद क्या खर्चे है, 3 साल बाद क्या करना है, क्या इन्वेस्टमेंट्स है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, और उसके लिए कितना अमाउंट उस समय चाहिए होगा, कैलकुलेट करने का भी ये टूल में है. और आज आपको मंथली कितना सेव करना है. हाउ मेनी इफ यू वांट समथिंग लाइक दिस कि काश ये चीज पहले होती तो मेरे लिए बहुत आसान होता. टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि काश ऐसा कुछ हमें मिला होता कभी पहले, या किसी ने बताया होता कि कितना प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, कितना खर्च करना है, और आज मंथली कितना सेव करना चाहिए आपको. और बाय द वे, अगर आपके पास सेविंग का स्कोप नहीं है, कि अगर सेविंग ही नहीं हो रही है, तो कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ाएं ताकि आपका 40% सेविंग होने लग जाए. या थैंक यू सो मच एवरीवन. सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस टूल व्हिच आई हैव क्रिएटेड. ओके. And I'm going to share with one of my client numbers. Okay. So ये जो tool है उसमें अभी तो blank है, right? I don't have put any data, but I'll give some examples so that you understand what exactly it is. Okay. So this is of one of my client. So the first part of this tool is called net worth calculation sheet. Okay. So when I say net worth sheet, आपको assets का पूरा उसमें क्या क्या होना चाहिए assets में, like for example cash कितना है, savings में कितना है, FD में कितना है, stocks में कितना है, gold में कितना है, PPF में कितना है, and it calculates total. And then कितनी liabilities है, total home loan कितना पे करना है, educational loan कितना पे करना है, कितनी EMI आप पे कर रहे हो, टैक्सेस कितने आपको अभी पे करने हैं इस साल, मेडिकल इंश्योरेंस कितना पे करना है, वहां से आपकी टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है, एंड इट कैलकुलेट्स योर नेटवर्थ. हाउ मेनी इफ यू वांट टू हैव दिस टूल? एंड बिफोर, बाय द वे, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. बिफोर दैट, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू यू दैट अगर आपको पहले ये टूल मिल गया होता, हाउ मेनी ऑफ यू, और रादर लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ मच you would pay to get this kind of a tool where it tells everything to you and it stays with you for lifetime as a learning? I'm just going to ask this question. Be honest, share whatever is there in your mind. Let me just ask this question to you all right. So before you are going to share, can calculate just any, just a number which is there in your mind, it's fine. I'm just trying to evaluate this tool, because this is something which I've created. Let me evaluate this. This is a question to the Superwoman family, not the YouTube family. People who are Superwoman club members, just share this. I just want to know what exactly, अगर आपको ऐसा कुछ टूल होता जिसमें, अभी तो मैंने एक पार्ट शेयर किया है, राइट? थैंक यू वैशाली. या अदर्स जो भी आ रहा है यार, शेयर करो ना. 50 के आपने वैशाली ने लिखा है, आप लोग बताओ. I'm not going to charge this, don't worry. But I'm just asking that अगर मिला होता कभी आपको तो, how much you would have paid? Yeah. Thank you so much. 1 lakh, awesome.
Okay, so I'm going to share this and just share the first part. So net worth calculate karta hai ye sheet. Okay. Now this is the first thing. Now the second thing is that this is a sheet where, and this is my monthly budgeting sheet that I've created. तो पहला पार्ट नेटवर्थ हो गया जो पॉजिटिव में होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए. उसके बाद इनकम, आपका इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है, पेंशन से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है. तो दिस क्लाइंट इज अर्निंग अराउंड 5.5 lakhs, बट देर इज लॉट ऑफ एक्सपेंसेस हियर, है ना. तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं जो पॉसिबल है वो डाले हुए हैं, और उससे इनकी सेविंग जो है वो इतनी सेविंग्स आ रही है, विच इज वेरी गुड, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन 50%. नाउ दिस इज अ टूल विच आई बिल्ट you, which is the second part. After that, there is, how many of you think that how many of you are actually consistent in practicing health? Type yes in the chat box if you're really consistent in your health and practicing health with Jyoti, getting fit every day. All of you are? Yes. How many of you have, I'm sure this question is very simple, that if you've been consistent and disciplined, have you seen some really effective or some really out of the way results, or what do you call, something which you are not even expecting कि ऐसा result आएगा? Type yes in the chat box if you have experienced something sort of this. Yeah, it is just a matter of being disciplined. So जैसे हेल्थ में डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही वेल्थ में भी डिसिप्लिन चाहिए होता है. रिच लाइफ जीने के लिए उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए. और डिसिप्लिन कहाँ से आता है? आपको अगर एक ऐसा टूल मिल जाए जहां पे आपको सिंपल हर रोज रात को 2 मिनट स्पेंड करना है, और दिन भर जितना गूगल पे से पे किया है, या पेटीएम से पे किया है, या अकाउंट से ट्रांसफर किया है, या किसी को कैश दिया है, वो आपने इस शीट में डाल दिया. ओके, सो दिस इज अ ट्रैकर टू track, and this is the third thing which is part of this course, where you will be able to have a sheet जहां पे आपको सारे कॉस्ट डालने हैं रोज के, रोज 2 मिनट लगाना है, और ये आपका टोटल मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करता जाएगा. तो आपको रोज ये ट्रैक रहेगा कि हाउ मच यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग. तो जो कुछ लोगों ने लिखा था ना चैट बॉक्स में कि मुझे, मैं खर्च करती रहती हूँ, राइट? I mean, if you find this valuable, type valuable in the chat box, that this is something which is needed, much needed for us, that at least somewhere I can track my expenses and it is there at one place. Okay, तो अब ये तो हो गया. अभी तक समझ में आ रहा है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स. अभी तक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. तो ये 3 चीजें मैंने बताई. एंड आर यू फॉलोइंग इन लव विद नंबर्स? आर यू फॉलोइंग इन लव विद नंबर्स? It is very difficult to ask someone to fall in love again, but I'm just asking you all to fall in love with numbers, right? And because that's something which is very important. Yeah, numbers are always real. It always cut through, right? Emotions थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, but 1 रुपया ही रहेगा, या 1 लाख ही रहेगा. Do you agree? Type agree in the chat box with what I'm saying. Yeah, awesome. So now I'm going to share. So 3 चीजें मैंने बताई अभी तक, right? Are you ready to know the fourth thing? Type 4 in the chat box. I'm going to share the fourth thing. Okay. Now this is what I was coming to, and this was about how do you set your goals for 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, 15, 20 years. And goals कैसे होने चाहिए? Your travel goals, if you're trying to buy a home, trying to get your dream car, any education for you or for your kids, marriage coming, retirement, safety, savings, business, you want to start a business. So this I've created. मैंने इसको साइड में इसलिए लिखा है, जब आप गोल क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा गाइडलाइन देगा कि किसके अराउंड आपको गोल क्रिएट करना है, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का. अब ये बताओ, अभी तक आपको जो मैं बता रहा हूँ कैसा लग रहा है आपको धीरे धीरे, कि हाँ ये तो कहीं कभी नहीं देखा, या कहीं नहीं देखा, या इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पे नहीं देखा? टाइप नेवर सीन इन द चैट बॉक्स. या बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव done for so many books I've read, so many things that I've done, and then just like Lala. Okay, now great. So thank you so much everyone for, I'm really happy to know that you are really liking it. Okay, so this is your rich life goal setting, and the next one is going to blow your mind, because ये एक ऐसी sheet है
जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, और आई एम गोइंग टू टॉक टू समवन who wants to, let's say, I want to speak to somebody here who has a daughter or son जिसकी, let's say, शादी होने वाली है फ्यूचर में कभी भी. Anyone, raise your hand who want to speak to me. Let us calculate the future value. Anyone? Okay, Komal. Sabni. Okay, Komal, yes, I'm going to unmute you. Komal, what is the, so who is going to get married, let's say, after how many years? Can you speak and share with us? सर एक्चुअली थोड़े समय बाद ही, मतलब ऑफ कोर्स हमारे बच्चे हैं तो हम उन्हीं के Okay. लिए प्लान करते हैं. आपकी बेटी है? हम्म, कितने साल की है, if I may know? 6 साल की है. 6 साल की. Okay, so Arna is also going to be 6 years, right? तो what do you think, आगे जाके बच्चे कितने साल में मैरिज करेंगे फ्यूचर में? We can't really predict, but all of you can share this in the chat box also while Komal is answering. Around 30, okay. आप बताइए कोमल, आपके हिसाब से फ्यूचर तो नहीं देखा किसी ने, बट किस हाँ, एज के अराउंड? हम सोचते हैं ना कि एक एज के अराउंड, तो मेरे को लगता है 24 के आसपास. चलो 24, राइट. अभी वो 6 साल की है, तो अभी कितने साल बचे फिर? 24 - 6, 18 साल, अच्छा. राइट. अब मुझे बताइए कि आज, ये सिंपल क्वेश्चन मैं सबसे पूछने वाला हूँ, और आई एम गोइंग टू टेक कोमल ऑल्सो इन द गैलरी व्यू एंड लेट मी ऐड हर इन द स्पॉटलाइट. ओके, नाउ ऑल द वुमेन आउट हियर, टेल मी दैट आज की डेट में अगर कोई शादी होती है तो कितना खर्चा आता है अप्रॉक्स? एंड इफ यू आर if you are a parent of a daughter, okay, 30 lakhs, 1 crore minimum, 20-30 lakhs, ठीक है, ठीक ठीक लगा लो यार, ये इतना ज्यादा थोड़ी होगा. 20 लाख एवरेज एक बता दो, एवरेज नॉर्मल ठीक ठाक शादी के लिए. 70 सर lakhs, हमारे ओके, यहाँ तो आराम से 80 क्रॉस करता ही है, 80 लाख ठीक है, क्रॉस. डन. सो चलो, कोमल ने बोला 80 lakhs, राइट. ये आज का, आप अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये पता है क्लियरली? ये मैं, आई एम श्योर हम सबको पता होगा, बट मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि जो आज के 80 लाख है, आज से 18 साल बाद अगर आज 80 लाख है तो वो उसकी उसकी वैल्यू 80 लाख नहीं होगी. ये सबको पता है ना? टाइप यस इन द चैट बॉक्स. या, बिकॉज महंगाई बढ़ती है हर साल, राइट. तो कोमल, अगर मैं आपको अभी बताऊं कि अगर आपको 80 लाख, आज की 80 लाख की 18 साल बाद वैल्यू जाननी है, क्या जानना चाहोगे आप? जी सर, बिल्कुल. Yes. So get ready now, and I'm going to share that with what I've worked on. Okay. So, are you ready to see the future value of marriage for 80 lakhs in the chat box? चलो, शर्मिला ने 2.5 CS दिया है. Let me calculate it. Okay. ये रियल है, ये मतलब ये कैलकुलेट अभी मैं करने वाला हूँ आपके सामने. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट. 8% इन्फ्लेशन रेट ऑफ यूएस यूजुअली रहता है, एंड कोमल हैज गॉट 18 years. प्रेजेंट वैल्यू इज 80 lakhs, राइट. आज की शादी में 80 लाख खर्च होते हैं. टेल मी द नंबर्स आर करेक्ट और नॉट. यस. सो कोमल, यू वुड नीड, you would need 3 crores 19 lakhs when your daughter will get married. How many of you feel this is crazy tool? एक सेकेंड में, और बहुत सारे लोगों ने 1 million लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखा, 2 करोड़. दिस इज एग्जैक्टली द अमाउंट दैट कोमल नीड्स. टाइप क्रेजी इन द चैट बॉक्स इफ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग. या, तो आप चलो कोमल से ही, कोमल पे ही हम आएंगे दोबारा से. सो कोमल, नाउ यू नो दैट 3.15 CR चाहिए आपको, राइट, अपनी डॉटर की शादी के लिए. ओके, नाउ मे आई नो राइट नाउ दैट how much you are saving. I'm not asking your income, I'm not asking your expense. One amount that you are saving, you can unmute yourself and share in the chat, share with us how much you think is the saving of your family or your monthly. एक्चुअली सर वो हम लोग वैसे भी लंबे टाइम से प्लान कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन को लेके और उसकी शादी को लेके. राइट. हाँ, अच्छा प्लान कर भी दिया है. मतलब हमारे यहाँ थोड़ा क्या है, वेरी वो नाइस. सिस्टम, बच्चा पैदा हुआ तभी से सारा प्लान तभी शुरू. से कर लेते हैं. बहुत बढ़िया. सो कोमल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, एंड दिस इज नॉट फॉर यू, इनफैक्ट सबकी लर्निंग के लिए है ये.
जैसे अब आपको एग्जैक्ट, अच्छा बाय द वे आपको ये एग्जैक्ट अमाउंट पता था पहले कि इतना एग्जैक्ट चाहिए होगा उस टाइम पे? नहीं, इतना नहीं पता था, पर जैसे अभी का हमारा खर्चा रहता है ना हर शादी का, तो हाँ, मुझे लगता था हाँ यार इतने पैसे तो अपने को भी, जैसे मेरी शादी में भी पापा बताते हैं कि 60 लाख का खर्चा हो गया था। राइट। तो फिर उनको लगता था कि यार तो हमें भी 1 करोड़ के आसपास तो लगेगा ही, क्योंकि ओके, ऐसा अब ये लगता है ना कि अब ये बताओ कि अगर मैं आपको आज बता दूं कि आपको मंथली कितना बचाना होगा, जी ठीक है? सर। जो मैंने टूल बनाया उसमें आपको आज बता दूं अगर कि कितना बचाना है आपको हर महीने, ताकि आपके पास 3.15 करोड़ हो जाए। I mean, if you want to see this calculation or this, crazy thing right now, type yes or type bring it on. Let me show you all this. Okay, awesome. Thank you so much, Komal. So, Komal, ready to know the monthly savings? जी सर। Yes. Okay. So, I'm going to share that. So, that's the next sheet. That's the next, module in my course. And this calls that monthly saving calculation. Okay. तो उसमें करना क्या होता है इसमें, या मैंने बहुत सिंपल बनाया है, वो कोई भी जिसको सिंपल से नंबर्स बस पता है उतने डालने हैं, राइट? तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 3 लाख, 3 करोड़ 15 लाख। ओके, अप्रोक्स इतना ही था ना, या 19 लाख जो भी था, वट एवर। ओके, तो 315 सही है ये? करेक्ट, इज करेक्ट। नाउ शी हैज टू इन्वेस्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स? 18 years। अब कोमल आपको ना ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां पे मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 12% का रिटर्न आए yearly, राइट? अगर आप मान लो एफडी और आरडी इस सब में कर रहे हो ना, तो आपको 8% के अराउंड या 7% के अराउंड रिटर्न आता है, ठीक है? तो आप ये बताओ कि अभी करंट 12% डालें या 8% डालें? आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, कितना डालें? सर वैसे तो 8% वाला ही काम करेगा। हाँ, तो 8% पे अभी मैं डालता हूँ। अगर मोस्टली लोग सेविंग्स कहाँ करते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, तो अभी मैं 8% डालता हूँ, ठीक है? तो अगर आप 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप सेव कर रहे हो, हर महीने आपको 65,000 रुपए सेव करने पड़ेंगे आज से अगले 18 साल तक, अगर आपको 3 करोड़ 15 लाख रुपए चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस वेरी सिंपल? टाइप सिंपल इन द चैट बॉक्स कि यार ये तो सिंपल है यार, मतलब कैलकुलेट करना कुछ हमें करना ही नहीं है, बस आसानी से पता चल गया। और कितने लोगों ने आज तक कभी ये देखा नहीं? या तो दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग, जो मैंने खुद अपने लिए किया, और मैंने सोचा नहीं, लेट मी हेल्प अदर्स ऑल्सो, ताकि आज आपको पता चल जाता है कि 10 खर्चे हैं या 10 एक्सपेंसेस हैं या 10 इन्वेस्टमेंट्स करनी है आपको, देन फॉर ईच एक्सपेंस हाउ मच ऑफ मंथली सेविंग यू नीड टू हैव। या ऑलराइट। सो नाउ, जैसे कोमल ने बताया कि कोमल इज ऑलरेडी हैविंग अ गुड सेविंग राइट नाउ और बहुत अच्छा प्लान है, बट ऐसे कितने लोग हैं जो एक्चुअली में अभी तक उन्होंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, एंड दे वांट टू एक्चुअली हैव अ चेकलिस्ट, कि एटलीस्ट हमें थोड़ा सा ऐसा पता चल जाता कि हाँ हम लोग ग्रीन में हैं या रेड में हैं, और फिर क्या क्या हमें करने की जरूरत है। एक सिंपल सा चेकलिस्ट होता ताकि ये पता चल पाता। Type yes in the chat box if you want to see something sort of this, right? So I've created a simple checklist. That's the next thing in this course, where you'll be able to just see that सेफ्टी नेट आपका है कि नहीं है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट आपने करनी चाहिए और उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली रहता है, इससे आपको क्लैरिटी रहे। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट क्या वो इन्वेस्टमेंट का पैसा आप निकाल सकते हो जब जरूरत हो, या आपको 15 साल 10 साल वेट करना पड़े? कैसी तरह की इन्वेस्टमेंट आप चाहते हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, या आप डालो और फिर भूल जाओ, मतलब पैसा फंस जाए पता नहीं 10 साल बाद 15 साल बाद? You want you want liquidity, flexibility, yeah? And that is what this checklist is all about, that where you should invest your money, where exactly liquidity is there, and then you can say yes, no, and I will get to know what is your score, is it green or red. That is not here, that is, I am going to get that, okay? And जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर है कि कितना, एग्जाम्पल, और ये मैं करके दिखाता हूँ फिर से किसी के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू वांट टू इन्वेस्ट इन एन आरडी और रादर एसआईपी, जिसमें 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 10 साल के बाद यू विल बी एबल टू एक्यूमुलेट 9,67,000।
और यही आप फॉर एग्जांपल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यही 18 लाख हो जाएगा। तो सिर्फ 6 साल बढ़ाया आपने, बट ये डबल हो गया। तो ये कैलकुलेटर इतना सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या किस चीज को चेंज करना है कि कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कितने रेट पे रिटर्न आ रहा है, और पर मंथ में कितना इन्वेस्ट कर रही हो। मान लो आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे ही 5 को 10 किया, ये देखो 18 से 37 लाख हो गया। you know so type amazing in the chat box if you find this checklist as something which is amazing. And by the way, how many of you really want to have this with you for lifetime, that this is there with you and you can learn, you can implement and teach so many other people जिनको ना कभी किसी ने कहीं सिखाया है, ना कभी किसी ने बताया है, और बाद में लोग स्ट्रगल करते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, कमाते हैं 9 to 6, but still they struggle because nobody has taught this. And that is what I thought, that no, let me just bring something which where people have this tool with them. So how many of you really want this? By the way, people who are watching me on YouTube, let me check how many of you are there on YouTube. And for this, it's of course a course. So there it's a paid course. So how many of you are giving me permission to just share that what I've crafted this for you? I've already told you. I think few more things are there in this. just जो last 2 steps है, जो actually एक bonus है, वो ये है कि अच्छा चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। पहला मुझे ये बताओ, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि चलो कोमल ने तो बोला कि शी इज सेविंग, राइट? बट हाउ मेनी इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट एक्चुअली प्लानिंग, नॉट सेविंग? टाइप नॉट देयर इन द चैट बॉक्स और नॉट देयर इन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स. Let me see how many of you are not there right now. Yeah. Okay. So if you're not there, you're not planning, this is the time, to start this, to start thinking about it. And for this, you would, of course, need something. अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनका सेविंग नहीं हो रहा है कुछ भी, और अभी वो माइनस में जा रहा है, मतलब कि you are actually living paycheck to paycheck or living on credit cards? Type it's me in the chat box. Yeah. So now I'm going to share the future where you can have a side hustle. How many of you can think that मैं कम से कम 2-3 घंटा तो निकाल सकती हूँ अपना जो भी काम अभी होता है, चाहे मैं होम इंजीनियर हूँ या वर्किंग हूँ, एटलीस्ट 2-3 घंटा तो मैं निकाल सकती हूँ फॉर माई करियर और फॉर एटलीस्ट क्रिएटिंग सम साइड इनकम, some side hustle? Type yes if you think that you can really devote, because then only I'm going to share 20 different things, careers, industries, which I've listed here, and I'm going to work in this course also with the people, on a 3 months plan, कि मैं 3 महीने तक आपके साथ इस पे वर्क करूंगा, जिसमें you start basically earning side by side and you start generating income. So let me share the industries. I'm not going to read every, but kuch important ones. So type bring it on if you want to know 20 different industries or 20 things that you can start working, and you can start earning by just investing 2 to 3 hours in next 3 to 6 months time. 3 से 6 महीने में. So let me share this. If you think that you have an expertise किसी एक सब्जेक्ट का, आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपको लगता है आपके सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छे हो, तो फिर अपने पोस्ट के अलावा भी आप किसी बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हो एज अ सोशल मीडिया मैनेजमेंट. 2 से 3 घंटा लगता है. खुद हमारी भी सोशल मीडिया की टीम है जिनको हम पे करते हैं, राइट? सो व्हाई कांट यू डू दिस? यू कैन लर्न अफिलिएट मार्केटिंग, और किसी और का प्रमोट आप बिजनेस कर सकते हो और कमीशन आप अर्न कर सकते हो. ऑनलाइन स्टोर आप क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो अगर आपका कोई एक्सपर्टीज है किसी एरिया में, राइट? जैसे कुकिंग आती है बहुत अच्छी, बेकिंग बहुत अच्छी आती है, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग द कोर्सेज. एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. ये इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है. ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, पॉडकास्टिंग कर सकते हो, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट? तो ये तो आपको जब आप when you get this course, you will have this detail, and then I help personally to the people who join this for the next 3 months time. Okay. So so far I've covered
what I had to share today. If you had a great learning or great time, type great or whatever comment that you want to share. How was your learning so far? And if you want to have the tool and you want to join my course, the price I'm going to reveal that, but this is there'll be a more price for the people who are watching me on YouTube for them to pay, because this is, but for Superwoman, people who are part of Superwoman Club, for them it is going to be a very simple affordable prices for the course, and because it is going to be a recorded course which is you will have, plus this tool also is going to be there. Okay, so if you want to get on this journey, type yes in the chat box, and I'm going to share that how you can get this course and you know uh, have this tool with you and learn from me. Yeah. Awesome. Thank you so much, everyone. Okay. So it's very simple. The what you're going to get in the course is you're going to get all these tools, and I'm going to teach on every step that how to calculate a net worth, how to calculate your expenses, how you can plan. So I'm going to share that screen and then share what exactly you're going to get. So you're going to learn everything from detail. So net worth कैसे calculate करना है, monthly budget कैसे आपको करना है calculate, और ये simple आपको सिर्फ entry करनी है. I'll tell you what all you need to fill. देन डेली एक्सपेंस शीट से पता चल जाएगा कितना एक्सपेंस हो रहा है. देन हाउ टू डू द गोल सेटिंग. सो आई टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू डू योर गोल सेटिंग, which are the things that you should keep in mind while you're doing setting up your goals for 1 year, 3 year, 5 years, 10 years, and 15 and 20 years. Then how to calculate this I've already shared, your monthly saving calculator and overall your investment checklist. And I'm going to teach people on how to get started with all of this. But if you want, let's say something which is where you want a personal support from me, there is a higher price for that you have to pay. It is not too much also, but I'm going to support. If you want personal attention of me, you can block my calendar, interact with me. I have a team of people also who can help you start this. Of course, karna khud aapko hoga, right? But you can start it on your own also. Okay, with our help, with our expertise. All right. So yeah, so simple. I've made it very simple for people who are watching me on on YouTube. The course price is 9999. If you want to join right now, you can simply pay 4999 and you can join this course. Okay, and this course is going to be available on our learning platform, our academy, and you'll be having the access as you do the payment. For all the Superwoman, what do you think should be the discount that I should give you? Or let me tell you that how many of you are ready to take action right now? I'm going to give you a very special discount right now just for Superwoman Club and my team. That you're going to get a link. You can put the link in the chat box of YouTube, and people who are ready to start the journey from YouTube, they can do the payment in the chat box over there. Let me just see that as well. So, team, you can put a comment in the YouTube channel and share the link. And over here for Superwoman, yes, I made it very simple and affordable for every Superwoman, because in this price that I'm going to offer you right now, this will be just for this call. And that is why, I'm going to, share that right now. You need to take action right now. But I'm going to give one more bonus where I'll give you one call with me. Okay, where you can fix one call with me. You will have the course access, but one call and we'll discuss about everything, the entire thing, your rich life goal. And trust me, that will be priceless, because when I sit with you, it is going to give you a next level, jump in whatever you're doing. Okay. So if you're ready, I'm going to share that. If you're ready to take action right now, it's very simple. I made it. I told my team to not make it 4999 for you all. You just have to only pay 2999 if you want to get this course and start the journey. Okay. Now, pay karna kaise hai? All of you have either Google Pay, Phone Pay, or Paytm, or you can pay through card as well. I'm going to share the link, and this link is only for Superwoman Club members. Team, don't share this link on YouTube. This is only for Superwoman Club members. So I'm going to share the link. You all can do the payment of just 2999. You'll have the course access. I'm going to cover all of this. And this course will be there with you. This tool is going to be there with you lifetime.
आपको ये पूरी शीट मिल जाएगी जो आप किसी को सिखा भी सकते हो, किसी को ट्रेन कर सकते हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ट्रेन समवन, एंड स्टार्ट डूइंग दिस। पेमेंट करना कैसे? सिंपल, यू कैन ऑल्सो डू पेटीएम, गूगल पे और फोन पे on this number, which is 9540195050, or you can pay on 97178599292. And how you have to pay on Razorpay? Very simple. You will click the link, you go there, enter your email and phone number, and pay 2999. And once you're done, type done in the chat box that you've done the payment. Yes, yes. For the online course, it is for lifetime. So this course access, entire thing will be recorded, and you will have the access for the course and this tool which I built. जो लोग 1 लाख वैल्यू और 50,000 बता रहे थे जिसकी वैल्यू, बट ओनली सुपरवुमन क्लब के लिए, दिस इज ओनली फॉर Fruit Triple Nine. ओके, yes. So go for it, and I'm going to stop sharing. The link is there in the chat box. I'm going to now stop my